Hey, so let's look at what I mentioned on Friday post market. So basically, I had mentioned that I was not really looking for a reversal, did not really have a plan at the open. The idea is to wait when Nifty comes between 570 to 450 levels and then decide what to do if I'm looking for a short or not based on how the price reacts to this level. So yeah, wait and watch till then, at least for positional trades. And considering from this week you have all Fridays are holidays, so tomorrow is also an holiday. So I don't really think I'm going to take a trade this week positionally. Intraday, I didn't really like the structure, so didn't really trade Bank Nifty. Did not have a system trade, and the volumes are there were no good volumes in Bank Nifty and Nifty. Usually stay away in the morning if I don't have any system trades. Nifty, I did share a system trade where I was expecting either a down move or an up move, so more likely a range based on how 115 close was. So basically, the trade was 115 closing near highs, then I'm looking for a short. Closing near lows or below VWAP, we're looking for a up move. The only difference was this was not supposed to touch VWAP, but it was. But I still went and took that trade. So these are the references. 115 if near highs, look for a short, so more like a range. If it goes above, you short, comes back to the same place where it was. If it is below, it goes back to the same for 1 hour candle high. Looking at it now, 1 hour chart on Nifty 50, took support in the morning at 200 MA moving average, then closing above 10 moving average, and this is where the trade also triggered, which gave basically was trying to go and break high. Yep, so not a bad day. Nothing else thing to add. Yeah, so how will I trade on Wednesday? So if Nifty gap ups or breaks today's high in first 15 minutes, I will look for scalp shots. Not in first 15 minutes, I'll probably wait for a 1 hour close and then see. If Nifty goes down, then I won't really do anything because I want some kind of correction to happen towards 20 moving average, and then probably I'll take some longs. Know the plan. Thank you. बैंक फ्राइडे का पोस्ट मार्केट देखते हैं पहले. बेसिकली मैंने बोला है कि मैं वेट करूँगा 450 और 5 जो गैप था 570 का वो फिल होने के लिए. वो फिल होने के बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या कर रहा है प्राइस. अगर नहीं भी फिल हुआ तो अगर इस रेंज में मैं डिसाइड करूँगा क्या कर रहा है प्राइस और फिर पोजीशन ही लूँगा. इस हफ्ते तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि कल छुट्टी है, फ्राइडे भी छुट्टी है और विक्स ऑलरेडी 12 चल रहा है, तो लग तो नहीं रहा ऐसे कुछ बड़ा मूव आएगा, पर देखते हैं. और इंट्राडे में 3 मिनट्स में बैंक निफ्टी में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, निफ्टी में भी कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मैंने ट्रेड किया नहीं. सिस्टम ट्रेड में रहती नहीं. सुबह निफ्टी में मैंने एक ट्रेड शेयर किया था अपने सोशल चैनल पे. बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रेंज में रहेगा पहले 1 आवर कैंडल के, तो अगर ये ऊपर रहता है तो नीचे आएगा, नीचे रहता है तो ऊपर जाएगा. ये लॉजिक था मेरे सिस्टम ट्रेड्स ने एटलीस्ट तो ये लॉजिक दिया था. तो मैंने बोला था कि 115 अगर हाई के पास रहेगा तो शॉर्ट करना, अभी 115 अगर वीवैप पे रहेगा तो वीवैप के नीचे रहेगा तो लॉन्ग करना. मैंने ये बोला था कि टच नहीं करना चाहिए, तो भी मैंने ट्रेड लिया. स्टॉप लॉस डे लो था इसमें, टारगेट हाइज थे, तो ये रेफरेंसेस थे. अगर 115 ये 115 का कैंडल है, अगर हाइज के आसपास रहेगा तो शॉर्ट करना, टारगेट रहेगा नया लो. और 115 अगर वीवैप के नीचे रहेगा तो लॉन्ग करना है, टारगेट रहेगा हाइज के आसपास. मैं नया हाई एक्सपेक्ट कर रहा था पर आई थिंक 82 चला गया, वो 89 है हाई. तो ये था आज का ट्रेड जो मैंने 15 मिनट पहले हमेशा शेयर करता हूँ अपने सोशल चैनल पे. तो ये आपके पास भी होगा ये ट्रेड अगर आप मेरा सोशल चैनल फॉलो करते हैं तो. एक ये हो गया. दूसरा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वेडनेसडे को. मैं देख रहा हूँ कि अगर गैप अप होता है तो अगर पहले 15 मिनट में अगर आज का हाई टूटता है या गैप अप होता है तो मैं 1 आवर क्लोजिंग के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा अगर मिलेगा तो. अगर ये 20 में आता है 1 आवर तक तो मैं लॉन्ग करने के लिए देखूँगा. ये 2 प्लान है और कोई प्लान नहीं है. थैंक यू.